everyone. I hope you all are fine. Myself Shailaja Dhumar and I welcome you all to Nagesh Karasgi Orchid School channel. Children, in the previous online session, we have learned about phonics, right? So in phonics, what we have learned? Can anyone remember? Yes, come on, give me the answer. And I hope you all are ready with your water bottle, pencil, eraser and textbooks of literacy subject. Okay, so today we are going to learn about phonics. So if you have literacy skill book, please keep aside and take your phonics skill book. Okay. So children, previous session we have learned about consonants and vowels and consonants. Okay. So children, how many vowels we have learned? Total 26 alphabets are there. In that, total 5 vowels are there and remaining 21 are consonants. Right. But today we are going to learn some more detail about family words. Okay. But before that, we'll just practice of phonic sounds. Okay. Quickly, we'll take the review of this. Okay. So repeat after teacher. Listen it carefully and pronounce it correctly. Okay, children. Come on. Say. A is for apple. Apple. B is for ball. Ball. C is for kite. Sorry. C is for cup. Cup. D is for dog. Dog. C is for cup. Cup. D is for dog. Dog. Next, A is for elephant. Come on. And what is the sound of A? Elephant. Yes, very nice. And what about this? F is for? Yes, F is for flower. Flower. G is for grass. Grass. Very good. Come to next letter. H is for house. House. Yes, E is for? E will be sound. But which letter is this? I is for igloo. Then what is the sound of igloo? What is the sound of I? E. Yes, I, igloo. Okay, next. J is for jar. Jar. K is for kite. Kite. Yes. L is for lion. Lion. M is for monkey. 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 N is for nose. Nose. Come to next letter. O is for octopus. O is the octopus. Octopus. P is for parrot. Parrot. Q is for quill. 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 Yes. R is for rabbit. Rabbit. S is for snake. Snake. T is for table. Table. U is for umbrella. Umbrella. V is for van. Van. W is for window. Window. X is for X-ray. X-ray. Y is for yak. Yak. Z is for zebra. Zebra. Okay, children? Okay, now take your phonics book. Now don't open the page. All of you look at to the board. Everyone look at to the board. See children, what I have written on the board? Yes, AB words and AD words. Today we are going to learn
three letter. Today we are going to learn 3-letter words. Okay. Those are, can you see here? C-A-B, cab, C-A-B, D-A-B, D-A-B, J-A-B, J-A-B, D-A-D, D-A-D, H-A-D, H-A-D, L-A-D, lad. But children, see, what we call to these words? Yes, what we call to these words? These are the ab words. If you will see here, A-B words, A-B, C-A-B cab, C-A-B cab, D-A-B dab, J-A-B jab. Again, what are these A-D words? D-A-D dad, H-A-D had, L-A-D lad. See, अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ये जो 3-letter words है, ये एंड कौन से वर्ड से हुए हैं? These are the AD words. तो AD words से यहाँ पे कुछ words एंड हुए हैं. यहाँ पर अगर आप देखते हो तो these are the AB words, हाँ. These are AD, but these are AB words. Okay, so ये जो AB words है यहाँ पे सब words, अगर आप ये जो word है, okay, अगर आप ये word देखते हो तो लास्ट में कौन से लेटर से एंड हुआ है? ये word AB से एंड हुआ है, right? So AB, AD, AG ऐसे कुछ वर्ड्स हम लोग अभी सीखने वाले हैं फोनिक्स में. ओके, तो व्हाट वी कॉल टू दिस दोज वर्ड्स, वी कॉल इट फैमिली वर्ड्स. व्हाट? फैमिली वर्ड्स. ओके, so there are many family words and vocabularies also we are going to learn. We'll see in details today. Okay, from today onwards in phonics book. Okay, but children, how you will pronounce it? How you are going to make the spelling? Like example I have written here. Now in AB words, अभी AB words में आप spelling कैसे बनाओगे या फिर उसको pronunciate कैसे करोगे? Like example I have written here, CAB cab. ये कैसे बना है? ऐसे ही बना है क्या? No, there is something, right? We are going to mix some words, then the word will get. Okay, we are going to mix some letters, then we'll get one letter, then we'll get one word. हमें कुछ letters mix करने पड़ते हैं तभी उसका एक शब्द बनता है. जैसे कि हम लोगों ने लास्ट में कुछ वोकैबुलरीज भी लिटरेसी स्किल बुक में हम लोगों ने कुछ वोकैबुलरीज भी सीखे थे, राइट? सेम लाइक दैट, बट दिस इज ओनली द पार्ट ऑफ फोनिक्स. ओके, नाउ सी, C प्लस AB. आपको पता है इसके जो साउंड्स है वो क्या है ऑलरेडी? यस. तो हमें अगर कैब का स्पेलिंग बनाना है तो फर्स्ट ख, C क्या आएगा? क. उसका क्या बोला है मैंने? क्या प्रोनाउंसिएट करना है? वो फोनिक्स, मैंने क्या बोला था आपको कि फोनिक्स का जो चार्ट है वो आपको बना के प्रैक्टिस करनी है. व्हाई? बिकॉज हर एक लेटर का जो है एक साउंड होता है. ओके, एंड इट विल बी वेरी इजी टू लर्न दोज वर्ड्स टू क्रिएट द स्पेलिंग. ओके, सॉरी. तो सी चिल्ड्रन, मुझे अभी कैब का स्पेलिंग मैंने कैसे बनाया है? C प्लस AB, कैब. सॉरी. नेक्स्ट, डैब का स्पेलिंग हमने कैसे बनाया है? ड-एब, डी आएगा प्लस एब, ड-एब. नेक्स्ट, जैब. ओके, नाउ व्हाट इज द व्हाट विल बी द लेटर ऑफ ज का जो साउंड है उसका लेटर कौन सा आएगा? जे. सो ऑलरेडी आई हैव रिटन जे प्लस AB, जैब. ओके, तो आपको रीड करते समय भी ऐसे ही करना है. कैब, जैब, बट टुगेदर कैब, डैब, जैब. ओके, बट अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे, इस मेथड से अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको जल्दी से लर्न हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट, AD वर्ड्स. ओके, दीज आर AB वर्ड्स. नाउ हियर AD वर्ड्स, D प्लस AD. अभी हमें डैड का स्पेलिंग बनाना है तो हम लोग कैसे बनाएंगे? फर्स्ट, इफ यू विल सी, D प्लस AD, डैड. नेक्स्ट, had. What is the spelling of had? Now tell me. Had, had, so जब हम लोग साउंड करते हैं उसका कौन सा लेटर आएगा? H आएगा. H आएगा प्लस AD, had. नेक्स्ट क्या है? lad. Okay, what is now L is a sound. So what will be the letter of L? Come on, tell me. L. Very nice. L plus AD, lad. Okay. So see children, C plus AB, कैब, जैब. We mix these words. We mixed AB family words together these letters and हमें कौन सा word मिलता है? जैब. There is one spelling, right? There is one word.
we create one word. Okay, when we are mixing the letters, when we are mixing the family words, okay, what we'll get? We'll get a word which has a meaning. Okay, H plus AD, had. L plus AD, lad. Okay, so children, these are the examples to how to create the words, how to mix the letters with family words to create the particular words. Okay, so these are the example, but we are going to see more details in our phonics books. Okay, so take your phonics skill book and come to page number 2. Okay, have you opened this page? I hope you have opened this page, children. See children, the A sound, okay, जो हम लोग अभी साउंड सीखने वाले हैं वो A साउंड के हैं. ओके, लुक एंड रीड अलाउड. जैसे कि मैंने अभी आपको AB एंड AD के कुछ एग्जाम्पल सिखाए हैं. दोज आर द वर्ड्स. ओके चिल्ड्रन, सो look at to the board, all of you. Keep pencil eraser downside. Okay, see, CAB cab, CAB cab. हम लोगों को जब स्पेलिंग बनाना है हम लोग कैसे बनाएंगे? C plus AB is equal to cab, D plus AB jab, J plus AB jab. Okay, AB, AD, AG, AM. These are the family words. What? Family words. So जब हम लोग लेटर्स प्लस ये फैमिली वर्ड्स मिक्स करते हैं तब एक वर्ड बनता है. इट हैज अ मीनिंग, जिसको एक मीनिंग होता है. ओके, सो दीज आर द 3 letter words. व्हाट वी कॉल टू दिस 3 letter words. इन फोनिक्स वी आर गोइंग टू रीड नाउ. ओके, सो रिपीट आफ्टर टीचर. से cab, 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 dab, dab, jab, jab, nab, nab, tab, tab. One more time. CAB cab, CAB cab, DAB dab, but हमें dab बोलना है. ओके, just for the practice and just for the clarity मैं आपको ये explain कर रही हूँ. ओके, next JAB jab, NAB nab, TAB tab. Okay, next AD words. JAD dad, JAD dad, HAD had, HAD had, LAD lad, LAD lad. Now see children, MAD mad. Okay, but हम लोग M जो है उसको किस तरीके से साउंड करते हैं? म, right? Mad, M plus AD, mad, mad, mad. Okay, इस तरीके से बोलना है. Say mad, 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 pad, 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 sad, 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 sad. समझा आपको? sad, sad. What is the letter of S? S का लेटर क्या आएगा? This is the sound. Then what will be the letter? S. S and AD. Sad, sad. Sad, sad. Now we are going to learn AG words. Okay, there are many family words in this year we are going to learn. Now see children, AG words. Then what? Now tell me, this is BAG bag. Okay, so how you will read this BAG bag? See children, B. What is the sound of B? B. Okay, bag, bag. See, B for ball. And what is the sound of letter B? Bag, bag, bag. NAG, nag. Now tell me, इधर है यहाँ पे चार्ट, इसमें से देख के भी आप बोल सकते हो NAG, nag. So N का साउंड क्या आएगा? Come on, look here. Come on, search the letter N. Here it is. Okay, N का क्या आएगा फिर साउंड? न, ag, nag, ag, nag. NAG, nag. BAG, bag. BAG, bag. NAG, nag, nag. फर्स्ट लेटर जो है ना,
जैसे मैंने आपको फोनिक्स के मेथड में बोला है, साउंड जो मैंने बोला है, उस तरीके से आप पहला साउंड बोल के ये वर्ड्स रीड करोगे ना, तो आपको एकदम ठीक तरीके से याद रहेगा वो स्पेलिंग, and it will be more easy to read the word, to read the sentence and to understand the spelling of that word. Okay children, so next we'll see S-A-G, sag. Then children tell me how you will read this, how you will pronounce it. S, where is S? S. And what is the sound of S? S, 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 ag, sag, S, ag, sag, S-A-G, sag. S-A-G, sag, so ag, sag. Okay, next t, t. Okay, sound t. Okay, then what will be the letter of t? T, very good. T-A-G, t-ag, tag. T-A-G, t-ag, tag. Nice. Next. Now tell me children, what is this? W-A-G. Okay, but what is the sound of W? Is this normally V or V? It is like this, V, V. See, look here, W, V, V. V-A-G, wag, V-A-G, wag. Okay, say, B-A-G, bag, B-A-G, bag, N-A-G, N-A-G, nag, R-A-G, R-A-G, rag, S-A-G, S-A-G, sag, T-A-G, T-A-G, tag, W-A-G, W-A-G, wag, wag. पहले हमने wag बोला, अभी it is actually wag, W-A-G, W-A-G, wag. Okay. Next, AM words. AM words. Can you see here? यहाँ पे जो words है AM से end हो गए हैं, and before that these are the letters. Okay, so D, D for dolphin. What is the sound of dolphin? D, D, dolphin. And next जो है इसके सामने क्या है? Am, am है. So how you will pronounce it? D, am. Very nice. Come on, try it. D, am. D, am, dam. See children, यहाँ पे सब आंसर्स मैंने ऑलरेडी लगाया है, इसीलिए आप ही के लिए है, आप इधर देख के भी आंसर कर सकते हो. ड एम डैम. नाउ एच और इसके आगे क्या है? एम, एम है. यस. देन व्हाट इज द साउंड ऑफ एच? कम ऑन, सर्च इट. ए बी सी डी ई एफ जी एच. एच. देन व्हाट इज द साउंड? ह, ह. एच ए एम, ह एम हैम, ह एम, ह एम हैम. J, letter J. What will be the sound of letter J? Come on, see here. Yes, J, J, jar. J, am, jam. J, am, jam. M, A, N, sorry, M, A, M, ma'am. What is the sound of ma'am? M, M. M, am, ma'am. M, am, ma'am. Next, R, R, R. R-am, ram, R-am, ram. Y-A-M, yam. Then what is the sound of letter Y? See here. Y, y. Y-am, yam, Y-am, yam. Okay children? So I hope till here you understand. I hope you understand today's session. Okay? So children, today we have learned AB, AD, AB, AD, AG and AM. These 4 family words we have learned. Okay. So I hope till here you understood. And one more thing, it's a kind request to all the parents. Please, अगर आपने अब तक phonic sounds का चार्ट नहीं बनाया है, तो आप बनाइए. ये बच्चों के लिए बहुत easy हो जाएगा. To create the spelling, to read the words. Okay. And one more thing, मैंने अभी क्लास में CAB, CAB, DAB, DAB ये spelling के साथ नहीं लिए हैं. Okay. But आपको बच्चों घर में जो है पेरेंट्स की हेल्प लेके आपको ये जो वर्ड्स है इसकी प्रैक्टिस करनी है. ओके, लाइक C-A-B, ख-ab, कैब, C-A-B, ख-ab, कैब, D-A-B, ड-ab, डैब, D-A-B, ड-ab, डैब. इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है. ओके, सो आई होप टिल हियर you understood this content. We'll see you in the next session. Till then, take care.